जैसे कि आपको ज्ञात है कि आयोग स्वेच्छा से इस संदर्भ में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स, जिसमें निश्चित रूप से माता पिता, स्कूली अथॉरिटीज भी सम्मिलित हैं, इस विषय पे बार बार वर्कशॉप्स करता है। इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र व्यवस्था है कि जो भी दर्शक हैं वो इस प्रकार की कंप्लेंट्स वहां पहुंचाते हैं और एक्शन होता है। एक दो विषयों पर आयोग जो स्वयं स्वतंत्र है मंत्रालय से, उन्होंने इस विषय पर कंप्लेंट्स चैनल्स तक पहुंचाई और निश्चित रूप से चैनल्स ने भी अपनी ओर से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है, क्योंकि हमने बार बार इसी सदन में मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चाएं की हैं। इसलिए सरकार का ये मत रहा है कि जो भी आज कानून की मर्यादा में इस प्रकार के आदेश अथवा एडवाइजरीज दी जाती है मीडिया को, मीडिया स्वतः अगर उस एडवाइजरी का उल्लंघन होता है तो अपनी ओर से कदम उठाते हैं। लेकिन जो एक एक विषय पर माननीय सांसद चाहते हैं कि एक्शन क्या हुआ, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मर्यादा में आता है। मैं निश्चित रूप से उनसे ये जानकारी प्राप्त कर आदरणीय महोदय तक पहुंचाऊंगी। श्रीमती बांगा गीता विश्वनाथ। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Honorable Minister given a clear reply. I would like to know from the Honorable Minister regarding the mental pressure, because children are even 4-5 years children also doing the performance without knowing the meaning also. They are doing the item songs also. It is very unfortunate. Sir, reality shows have adverse effects on children. The pressure to perform can lead to depression in children participating in reality shows. What are the steps taken by the government to ensure safe environment for children participating in TV programs across the country? And what are the measures taken by the government to protect the mental health of the children participating in the programs? Thank you, sir. I think, sir, that the honourable member has highlighted angst that has been felt and reflected in this very house time and again. जैसे कि महोदय ने इस प्रश्न की मर्यादा में ही अपनी चिंता को व्यक्त किया, I am reiterating what the lady has said and support her desire to ensure that mental health facilities should be given to such children. I can say, sir, that the ministry has engaged with NIMHANS to start a program called Samvad, under which we have ensured that those who are protecting children at such sites, including children who are in childcare institutions, those duty holders get enough support, so do children through the services of NIMHANS on issues of mental health. I would take her position as a suggestion, sir, and in collaboration with my colleagues in the Ministry of Information and Broadcasting, hope to reach out to the industry at large to ensure that the industry and especially production houses that engage with children can equally benefit from the services of NIMHANS under the project called Samvad. It is a good reflection of her compassionate stand. I compliment her. Instead of referring Srimati a lady, you should refer her as a member of Honorable member. Honorable lady member. Umbrage that the honourable leader has taken to my position no that he would devoid her status as a lady is something which is flummoxing me, but I would, it is quite ironical that two men stand here to tell me how to address a lady, but allow me to finish. When I address an honourable member in this house through the chair, there is a constitutional presumption that I do so to a member of parliament, that you would not presume her to be a member of parliament as she is diligently and duly seated here is a reflection of how you look upon her, but I look upon her proudly as a female parliamentarian, and I have taken absolutely no disrespect to her position or her presence in the house. Srimati Kanimodi. Thank you, sir. In continuation to the previous member who asked the question, I'd like to ask the minister if they're considering giving an advisory to these production houses, and because many children are participating and they are, forced to or without their understanding act in scenes with, obscene scenes and nudity and all that.
So if there is an advisory and some clarity about it, I think it will go in a long way to protect these children. Thank you. Sir, I would like to, through you, highlight that nudity, especially in context to children and their depiction, is illegal, especially under the POCSO Act. And the government is committed in collaboration with states to ensure that such devices or methodologies in terms of production or circulation of such depictions are not only disallowed but also punishable under the law. I would here, sir, reiterate that apart from the advisories which have been given, we are of the belief that there needs to be a consistent engagement with media on issues of, since we deliberate in this very house on issues of independence of thought and expression, that is done within the contains of the law. And I would here again highlight, sir, that this House resolutely, irrespective of our political differences, has pronounced through the POCSO Act the intention to ensure that those who depict children in such fashion are punished. It has happened before, it shall continue to happen, and I'm grateful for the House's resolution with regards to the same. My gratitude to the female parliamentarian. Question number 424, Srimati Aparijata Saningi. 423, Shri Dinesh Chand Yadav. माननीय मंत्री जी, श्री अजीर रंजन चौधरी जी. Sir, Minister has given an elaborate answer. I must appreciate it. But certainly there is a semi side of the performance of ICMR, which is regarded as an India's nodal medical research agency. For example, supermodel. We know that the issue of supermodel was discussed during the COVID period in the country. The supermodel, published in October 2020 in the ICMR run Indian Journal of Medical Research, predicted that the epidemic in India had passed its peak in September 2020 and that the country would be able to control the virus's spread by the end of February 2021 by following the safety protocol already in place. Top government officials, including Prime Minister himself, mirrored the supermodel's rosy projections. Modi ji even said in February 2021 that India's fight against COVID-19 had inspired the rest of the world. But barely 2 months later, India reported record high levels of COVID-19 cases amid a devastating second wave that left lakhs dead and many more severely ill. May I ask Honorable Minister whether ICMR had misguided the Prime Minister or Prime Minister himself has misguided the ICMR? What is the response of Honorable Minister? Okay. आपको मैंने इजाजत नहीं दी, माननीय मंत्री जी. Okay, no. Okay, मंत्री जी. Okay. Okay, no. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, प्रधानमंत्री जी क्या निर्देश देते हैं नहीं देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, देश को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के समय पर निर्देश, सही निर्देश की वजह से ही विश्व में सबसे बेस्ट कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन हिंदुस्तान कर पाया है. इट्स वन थिंग. सेकंड, जब आईसीएमआर का सवाल है, तब आईसीएमआर हमारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देश की नोडल एजेंसी के रूप में काम करे, बात सही है. और यही आईसीएमआर जिन्होंने समय समय पर एफर्ट लिया, समय समय पर सरकार को गाइड किया, समय समय पर इनिशिएटिव लिया, यही आईसीएमआर ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार अपने साइंटिस्ट को काम पे लगाया. और एक समय था जब दुनिया में कोई वैक्सीन आती थी, रिसर्च होता था और वैक्सीन डेवलप होना उसके लिए जो समय लगता था, प्लीज लिसन टू माय, आई गिविंग टू रिप्लाई टू यू प्लीज. रिसर्च होना ये देश के लिए बहुत दूर की बात थी. यही प्रधानमंत्री जी ने हमारे साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और हमारे आईसीएमआर ने एफर्ट लिया और दुनिया कोविड का वैक्सीन लेके आई. हिंदुस्तान आईसीएमआर के सहयोग से
इंडिया में भी इंडिजिनियस वैक्सीन बन गया। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश ये इंडिया बन चुका है आज के दिन में। और मैं ये भी आपको बता दूं, यही हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से उसका देश को क्या समर्पण है, क्या उपयोग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड वेव में, ओमिक्रॉन में, दुनिया में सेकंड वेव में जितना डेथ हुआ था इतना ही डेथ हुआ, लेकिन इंडिया में थर्ड वेव आसानी से निकला क्योंकि वैक्सीनेटेड थे और वैक्सीन इंडिजिनियस बना था और हमारा रिसर्च था। इसलिए आईसीएमआर के प्रति हमारा प्राउड है और आईसीएमआर आने वाले दिनों में भी नॉट ओनली फॉर कोविड मैनेजमेंट बट अदर टाइप ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम कर रहा है। बीवी सत्यवती, बीवी सत्यवती। Thank you, Speaker, sir. डॉक्टर Speaker, sir, I want to ask the Minister of Health and Family Welfare. Most of the recovered patients after acute COVID-19 illness may continue to experience various signs and symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, etc. Speaker, sir, through you I want to ask the Minister of Health and Family Welfare whether the government can provide any details of research conducted by ICMR on the complications after recovering from COVID-19 and also on the possible effects of COVID-19 fourth wave in India. Thank you very much. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया है मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उपस्थित किया है वो पोस्ट कोविड को लेके है। आईसीएमआर जी वो माननीय डॉक्टर सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि लगातार आईसीएमआर ने इस दौरान 250 पब्लिकेशंस किए हैं जो कि कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड के जो भी रिसर्च हुए हैं वो उस पब्लिकेशंस में है। उसके बाद ये जो भी रिसर्च आते हैं उस आधार पर हमारी नीतियां बनती है और वो राज्यों को हम लगातार दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारे पब्लिकेशंस की रिपोर्ट पे, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे पब्लिकेशंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी उसको अच्छा सराहना गया है, जो कि ड्रग ट्रायल को लेके है जिसमें कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल भी चला, उसका रिपोर्ट भी मिला और WHO का सॉलिडेटरी ट्रायल रिपोर्ट भी चला। सर, आई वुड लाइक टू inform the honorable member that the international journals not only published the result but also spoke highly about the initiative through their editorial comment. श्री महाबली सिंह जी, आप। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर भारतीय और विज्ञान संस्थान का जो आईसीएमआर है वो निश्चित तौर पर कोविड-19 के लड़ाई में उसका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है, जिसके चलते कोविड पर हम लोगों ने विजय पाने का कोशिश किया। लेकिन महोदय, जो प्रधानमंत्री महोदय का जो आत्मनिर्भर भारत के दिशा में जो पहल हो रहा है उसमें आईसीएमआर ने बहुत बड़ा भूमिका अदा उसमें कर रहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि ये आईसीएमआर पर बहुत बड़ा एक बोझ है, तो क्या माननीय मंत्री इसको बोझ को कम करने के लिए इसका विस्तार करना चाहते हैं? क्योंकि विकसित दो देश है महोदय, उसमें एक से अधिक संस्थानें काम करती है, तो इस पर क्या विचार है? महोदय, आईसीएमआर बोझ सहने के लिए सक्षम है और भी कितना भी बोझ आएंगे वो सहेंगे और उसका एक्सपेंशन। जी Sir, thank you, Speaker, sir. Thank you for giving me an opportunity, sir. Sir, whereas the Honourable Minister has given a detailed achievement list, which has already been expressed by the Prime Minister and every minister in this House, I would like to ask specifically a couple of things, sir. Sir, as the previous member asked, sir, post-COVID deaths, especially sudden cardiac arrest, is being reported throughout the country. Sir, very famous personalities have been just passing out, dying. Sir, as the ICMR conducted some research on this, because basically we have been only aping the West,
gathering information from what the West is saying and following the medical protocol. Sir, the second part of my question is the minister aware the way the hospitals went vandalizing, I will say, looting the public, especially in the third wave, in the Omicron wave, sir, they were giving this concoction called this cocktail injection, which cost about 1,20,000, along with the medical companies. Sir, whereas only one injection is needed for a patient, but it comes in 2 vials, so compulsory they have to buy 2 vials, which cost 1,38,000 rupees. Whereas, sir, every patient was forced throughout the country to spend 1,50,000. Sir, as you are very aware of it, have you done any research, Indian research, to analyze post-COVID, especially in the sudden cardiac arrest and blood clots? Do we have any information, sir? Please do share. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के बाद और कोविड के दरमियान जब किसी को ट्रीटमेंट की जाती है या तो वैक्सीन दिया जाता है, तो वैक्सीन देने के बाद एक आधे घंटे तक पेशेंट को वहां रखना होता है, जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति वहां रहते हैं, और उसको कोई पर साइड इफेक्ट होती है कि नहीं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कोविड हो गया, कोविड होने के बाद वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होने के बाद भी कई सिम्टम उसमें कई समय तक कई पेशेंट में अपनी हेल्थ के अनुसार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में भी ICMR उसके ऊपर स्टडी कर रही है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसमें से जो निकलता है उसमें उसका प्रोटोकॉल में प्रतिबद्ध किया जाता है, और प्रोटोकॉल के अनुसार उसको आगे के ट्रीटमेंट कैसी होनी है उसके पर मार्गदर्शन दिया जाता है। तीसरा, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चंस किया है, कोविड प्रोटोकॉल के लिए समय समय पर कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है, ऐसा प्रोटोकॉल यहाँ से तय करके दिया जाता था, और हॉस्पिटल और देश की हॉस्पिटल उसको फॉलो करे, ऐसी एक व्यवस्था है। हम अपेक्षा करते हैं और निगरानी भी रखते हैं कि वे ही उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, जब ट्रीटमेंट का सवाल आता है और कोई महंगी मेडिसिन, यूजफुल मेडिसिन, हम अपेक्षा रखें कि डॉक्टर है और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना है, वही हमारे पास विकल्प होता है और डॉक्टर उसको उचित ट्रीटमेंट दे। लेकिन उसमें भी जो कोई गलत प्रैक्टिस हो जाए, एक प्रैक्टिस चलती थी कि डॉक्टर को भी कंपनी की ओर से बहुत तोहफा दिया जाता था, कोई ट्रूट दी जाती थी, और ऐसा करके वो ज्यादा मेडिसिन बेचने की कोशिश करते थे, और जिसमें ज्यादा फायदा होता था उसका लाभ भी कई बार डॉक्टर लेते थे। लेकिन हमने डिसीजन किया है, मोदी गवर्नमेंट की ओर से ये डिसीजन हुआ है कि कोई अपने यहाँ पेशेंट को कोई डॉक्टर को कंपनी की ओर से कोई टाइप की गिफ्ट नहीं दी जाएगी, और नहीं कोई डॉक्टर को उसको स्वीकारना है, ये भी सुनिश्चित किया गया है, जैसे कि उचित ट्रीटमेंट की जाए। क्वेश्चन नंबर 424, श्रीमती अपरिजिता सारंगी। 424 सर। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रख दिया। Thank you, Speaker, sir. Sir, as on 11th October 2021, around 4.5 crore cases were pending in different courts of India. Of these 4.5 crore cases, 87.6% cases belong to the subordinate judiciary alone. Now, sir, keeping in view the huge pendency of cases and the need to provide easy access to the people in the rural areas to the justice system, Gram Nyale Act 2008 was enacted by this Parliament. Now, sir, whatever analysis that I could do and whatever data that I could collect, on the basis of that, I can say that only 256 Gram Nyales have been set up so far in 10 states out of the 15 states in which they were supposed to come up. It's a very small number, sir. So the Honorable Supreme Court in 2020 had directed the states to issue notification for setting up of Gram Nyalayas, and also the Honorable Supreme Court had urged the Honorable High Courts to expedite the consultation process required under the law. So there is an urgent need, I would submit, to increase the capability of our justice delivery system in order to address the issue of ever-increasing litigation in the country. So against this backdrop, I would like Honourable Minister, Law and Justice to tell us as to what kind of strategy is in place, what kind of action plan is there, and how do we go ahead? What's the thought of the government on this? Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो मूल सवाल है वो केवल ग्राम न्यायालय से संबंधित है। ग्राम न्यायालय में मैं बता सकता हूं कि कितने
मामले निपटाए गए हैं, कितने लंबित हैं और राज्यों की स्थिति क्या है। इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जो एक्ट है उसमें मैंडेटरी नहीं है कि राज्य ग्राम न्यायालयों को लागू करें, ये एक एडवाइजरी है। 15 राज्यों ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी, लेकिन बाद में केवल 10 राज्यों ने ही ग्राम न्यायालयों को खोला है। 476 नोटिफाइड किए गए थे, लेकिन केवल 258 जो हैं इस समय फंक्शन में है। Answer. We need to expand the scope. We need to have more Gram Nyayalayas, sir. Sir, our Honorable Prime Minister has been focusing on Antyodaya, and that's the mool mantra of our government. Sir, against this backdrop, I must say that with his directions, the Niti Aayog had gone for an evaluation of the Gram Nyayalaya scheme very recently. And, sir, the Niti Aayog recommended the continuation of the scheme, and the government did so from 1/4/21 to 31st March 26. This Gram Nyayalaya scheme would continue. So, sir, through you, I would urge the government to ensure that we have more number of Gram Nyayalayas in the country and the people in the rural areas get access to the system. And I'm sure through this, we will be realizing the vision of our Honorable Prime Minister. Thank you. अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि सरकार ने 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 26 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और हम लोग राज्य चाहें तो वो जहां उनको ज़रूरत है, जो रिमोट इलाका है, जहां वो समझ रहे हैं कि गांव तक जो गरीब हैं और जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं या दिव्यांगजन हैं, उनको जाने में दिक्कत होती है, तो राज्य सरकार अपनी समीक्षा के अनुसार न्यायालय खोल सकते हैं। और केंद्र सरकार उसके लिए जो आर्थिक सहायता, जो हमारी एक दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार 18 लाख रुपए देते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए भवन के लिए, 5 लाख रुपए वाहन के लिए और 3 लाख रुपए फर्नीचर कार्यालय को चलाने के लिए। इसी के साथ 3.2 लाख शुरू के 3 वर्षों में उनको दिए जाते हैं। श्री विनायक रावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अपने देश में लाखों की संख्या से पिछले कई वर्षों से मामले अभी भी प्रलंबित है और लोग करोड़ की संख्या है, 3 करोड़ से भी ज्यादा है। और कई अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, कई लोग न्याय की अपेक्षा करते करते बेचारे उनकी मृत्यु भी होती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलते अपनी जिंदगी में। मेरा की विनंती है आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से कि आप अभी देखें कि आपने कई राज्यों ऐसे, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उन्होंने इस राज्य में एक भी ग्राम न्यायालय उन्होंने शुरू न कर सके। इसके पीछे कारण क्या है? खास करके जजों की कमती, ये सबसे पहले प्रमुख कारण है। तो ये ग्राम न्यायालय अध्यक्ष महोदय मैंडेटरी होना चाहिए केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को, और उसमें जो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ही लोगों को सही वक्त में न्याय मिल सकता है। क्या सरकार इसके ऊपर पॉजिटिवली सोचेंगे? हमारा संघीय ढांचा है, जो मूल ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है, उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार चाहें तो वो ग्राम न्यायालय खोल सकती है, और जहाँ जहाँ वहाँ खोलेंगे जो केंद्र सरकार की सहायता है वो उनको दी जाएगी। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा राज्यों को कि अगर वो जितने भी संख्या खोलना चाहें, और जो राज्य, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है केवल 15 राज्यों ने शुरू में सहमति व्यक्त की, बाद में फंक्शन केवल 10 राज्य कर रहे हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या है, ये सबको पता है। श्री हनुमान बेनीवाल, माननीय दे दो पूरा जवाब दे दो। प्रधानमंत्री जी की भी यह है कि एक्सेस टू जस्टिस बिल्कुल गांव तक, न्यायालय आपके दरवाजे तक पहुंचे अंतिम व्यक्ति को, बल्कि कहा गया है कि अंत्योदय के साथ ये जो है न्याय का अंतिम व्यक्ति को भी न्याय के मामले में भी उसको अंत्योदय दिया जाए। श्री हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 424 के अंदर आपने पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
मंत्री जी ने जवाब के बिंदु संख्या घ में ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बताया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 6(2) ये उपबंध करती है कि न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा अन्य समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर राज्यों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र अपने द्वारा जारी अधिसूचना आदि की समीक्षा करती है या नहीं, और करती है तो राजस्थान में कार्यरत ग्राम न्यायालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा अन्य समुदायों में कितने कितने सदस्य और इन समुदायों में कितने सदस्यों को और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक ही पूछना होता है, इसलिए मैं इसी का पार्ट है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा मंत्री जी से कि राजस्थान में 45 अधिसूचित ग्राम न्यायालयों में 45 पूरे न्यायालय तो कार्यरत है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ मंत्री जी, क्या राजस्थान के उक्त ग्राम न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी पद भरे हुए हैं या नहीं? यदि नहीं तो भरे हुए हैं तो केंद्र के स्तर से स्टेट को पद भरने तो निर्देश देने को लेकर सरकार की क्या मंशा है, यह आप ब्यौरा प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नोटिफाइड 45 थे और कार्यरत भी 45 हैं, और जब कार्यरत होते हैं माननीय सदस्य महोदय तो वो काम मैंने आपको सौंप रखा है। ये जनसभा नहीं है, ये लोकसभा है। आप हेडफोन लगा लो। तो अध्यक्ष महोदय, जैसा राजस्थान के मामले में और ये राजस्थान के मामले में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उनका प्रश्न था कि एक सप्लीमेंट्री में 3-4 सप्लीमेंट्री थी, तो मैं सभी उनके ये विस्तारवादी जो उनके सवाल होते हैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि राजस्थान में 45 जो नोटिफाइड थे, 45 ही कार्यरत हैं। और आपको बताना चाहेंगे जब कार्यरत तभी होती है और हम पैसा तभी देते हैं जब वहाँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो जाती है, जब कार्य और पोर्टल पर उसकी वो सूचनाएं भी देते रहते हैं। दूसरा आपका यह था कि क्या केंद्र सरकार निगरानी करती है, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि 2 प्रकार की समितियाँ हैं। राज्य जो समिति है उसमें वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार जनरल साहब और जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं वो, इसके अलावा गृह सचिव, लॉ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, ये उसके सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार में जो होता है वो न्याय सचिव होते हैं, इसके अलावा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं और उसके अलावा राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, और हमारे यहाँ एक डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं जो संयोजक होते हैं। वो लगातार हर महीने इसकी निगरानी होती है और प्रत्येक महीने की 5 तारीख को पोर्टल पर इस प्रकार के संपादित कार्यों को रिकॉर्ड वो भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 425। हाँ, जो आप एक और यस आरक्षण, उसी में आपकी ज्यादा रुचि रहती है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, एससी की, एसटी की या ओबीसी की अथवा माइनॉरिटी की अथवा महिलाओं की अथवा दिव्यांगजनों की, उसी प्रकार से वहाँ पर जजों की नियुक्ति में ये आरक्षण पूरा किया जाता है। और समय समय पर जो है हमारा विभाग इस बात को वो भी करता है कि कहीं किसी का प्रतिनिधित्व कम ना रहे। क्वेश्चन नंबर 425, उत्तम कुमार रेड्डी। क्वेश्चन 425, माननीय मंत्री जी। जवाब सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir. My question was about the Anganwadi centers, the honorarium being paid to the Anganwadi workers and helpers, and about the rations being supplied. Speaker, sir, through you, I'd like to ask the government that in the reply given, in your written reply, you have said rations supplied to Telangana state for Anganwadi services, 19,000 tons of wheat, 6,000 tons of rice, and another 19,000 tons of fortified rice. Sir, through you, I'd like to bring to the notice of the government that not even 1 grain of wheat or not even 1 grain of fortified rice has been supplied to the Anganwadi centers in Telangana. Let me complete, ma'am. The only food grain actually supplied to the Anganwadi centers has been coarse rice with lot of broken rice and foreign material. So I'd like to ask the government, sir, what was the actual supply of food grains to Anganwadi centers in the year 21-22? So second, I'd like to bring to the notice of the government through you
that for the Anganwadi centers in Telangana, rice, dal and oil are being supplied. But for everything else, to buy gas cylinders, to pay electricity bills, for vegetables, salt and other condiments, only for every child 1 rupee 15 paisa per day and 2 rupees 40 paisa per day for a pregnant or a lactating mother is being paid. Now, even this, the bills have not been paid to the Anganwadi workers and helpers by the state government for last 6 months. Does the government of India expect that at 1 rupee 15 paisa per child per day, the cost of the gas, current, vegetables, salt, condiments can be met? And so I'll come to my next question after. The honourable member seeks an answer as to the supply of food grain and the tonnage given to the particular state that he represents. The numbers have been mentioned clearly in the annexure that the honourable member quotes. And I am particularly shocked that the member levies a serious charge that such food grains have not found themselves in the supply chain in the Anganwadi systems of the state. I will, with a note of caution, take his outrage pointedly to the state government and seek an explanation. Secondly, sir, the cost norms in collaboration and in conjunction with state governments are reached on a yearly basis. Apart from monies given for food and monies given for take-home ration, monies are also given for infrastructure facilities. Upon receipt of detailed response from the state, especially with regards to the charge made by the honourable member, I will additionally supply to the honourable member infrastructural support given to the state for the Anganwadi systems. I again reiterate that the charges made by the honourable member are extremely serious because the supply chain, as has been evidenced in the annexure, is a position of the Government of India upon receipt of these food grains by the state government. Why they have not found, as per the honourable member's position, themselves in a position to receive it at single Anganwadi centres is a matter of investigation. I'd like to bring you to the Minister's notice that I stand by my statement that not 1 grain of wheat or not 1 grain of fortified rice has reached any Anganwadi centre in the state of Telangana. Sir, my second supplementary question is, in your reply about the Anganwadi centres without adequate infrastructure, 1.33 lakh Anganwadi centres do not have pakka buildings. 8.5 lakh Anganwadi centres do not have piped or tapped water. 2.87 lakh Anganwadi centres do not have toilets. Sir, does the Government of India have any plan to enhance the infrastructure? I think you have 7 crore children studying in the centres. At the minimum, we should be able to provide a pakka building and a toilet and some drinking water. I'll just complete. Sir, as per the Minister's reply, Anganwadi workers and helpers are being paid, Anganwadi workers are being paid 4,500 rupees per month. And Anganwadi helpers are being paid, if I remember right, 2,500 rupees per month. Okay, the state governments are adding something and paying. Today in our state, an Anganwadi worker is being paid 13,000 rupees a month and 7,000 rupees for an Anganwadi helper with no medical benefits, no PF, no insurance, no retirement, no nothing. And I'd like to bring to the Minister's notice. Okay, sir, I'll finish. Sir, Anganwadi workers and helpers should at least be paid the minimum wages. There is a wide disparity between states also. So I suggest to the Government of India, Anganwadi workers honorarium from Government of India should be increased to 10,000 and for Anganwadi helpers to at least 5,000. Thank you. Increment that the increased allocation as honorarium to the Anganwadi workers has been done by the Modi government is possibly an acceptance not expected from the honourable member.
However, there are additional incentives given by the Government of India, additional to the raise in honorarium. I would humbly, sir, through you, beseech the honourable member to reflect on the difference between honorarium and the term salary. I will also, however, like to, through you, convey to the honourable member that the Government of India is committed to ensuring that insurance benefits are given to such honorarium workers, and those benefits can only be given through the cooperation of state governments. We have been in conversation with state governments across the country to ensure that the benefits of insurance cover is given to our Anganwadi workers. Additionally, 180 days of maternity leave, 20 days of paid annual leave has been given to Anganwadi workers. And under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, those who have actively engaged in COVID duties are also covered under the 50 lakh insurance benefit that the Government of India has professed to state governments. It has been our endeavour to ensure that state governments give us the details for us to reach out to those workers and their families to provide that benefit. And whichever state has reached out and listed such workers who have been in such duties, they have duly received support from the Government of India. श्रीमती मंगल सुरेश